forward or not, we don't know. Now, what are the political dissensions creating problems within the Pakistani? Imran Khan ke saga ke upar aap khud you're having another discussion, so I will Talk not about it, sir. I will not much about it, but enough to say that the military, the army, when I say military, I mean army. Navy, Air Force का कोई बात ही नहीं है. The army supported Imran Khan. फिर army did everything it can to send him out. Or he believes that the army has kicked him out, and therefore he says that I will now sort this army out. और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है ट्रूप्स पे? आप सोचो, हम दोनों जनरल रहे हैं, वी हैव कमांडेड ट्रूप्स इन एवरी रैंक, और ट्रूप्स के ऊपर, अपने ऑफिसर्स के ऊपर, वेटरन्स के ऊपर, फैमिलीज ऑफ ऑफिसर्स के ऊपर अभी ऐसे स्प्लिट आया है. आप कोई भी अब ट्विटर में जाइए, आप देखिए, विद इन फैमिलीज, हस्बैंड इज सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड द आर्मी, wife is supporting Imran Khan. Children are split on this. ये क्या हो रहा है? वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, आपको पता नहीं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाला which is a very shocking press release. They have said and have said और मैं ये देखता हूँ कि as proud citizens of Pakistan we affirm the importance of upholding rule of law. ये 2 April को निकला. Yeah. And fundamental rights, etc., etc. We call on Pakistanis to join us in supporting the Supreme Court effort to protect the Constitution and promote democracy, as they expect us to join them. Let us stand together in solidarity and uphold the principles of justice and freedom. Failure to hold free, fair, and timely elections will be a grave disservice to people of Pakistan, will undermine the very foundation of democracy, etc., etc. So, ये जब हुआ है, और फिर क्या हुआ है 4 अप्रैल को, ये 2 अप्रैल को इन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला, और 4 अप्रैल को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस डिले जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है और गवर्नमेंट बता रहा है इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा जो असेंबली इलेक्शंस है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अभी 14 मई को आप पोल्स होल्ड करेंगे. That's come out, and in fact there is some problem about that also in the yes. That now, we will not get into that at this point, sir. I would request you to focus only on the armed forces, because बाकी जब हम आएंगे उसके बारे में बात करेंगे. Now what has happened is that one second, the armed forces of Pakistan are, firstly, the appointment of Asim Munir as chief. Special permission was sought because he had already retired 3 days. Yeah. But because his appointment was made, that retirement was not considered retirement, because it was announced prior to that. He is considered to be pro-Nawaz. And if I may interfere, sir. Yes, he is not only considered to be pro-Nawaz, he is considered to be anti-Imran also. And yes. Because Imran removed him as DGISI. Yeah. I'm coming to that. After 9 months only. Correct. He was DGISI और फैज अमीद को ले आया. और ये कैसे हुआ है? Asim Munir, some people, some Pakistani commentators are saying he has been appointed because of US influence. और जो सीनियर मोस्ट जनरल थे उसको CJSC बना दिया, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया, एंड उसको जनरल मुनीर को ये चीफ बने. और पाकिस्तानी आर्मी में पैसा नहीं है, मिसाइल्स ऑर्डर्स तो प्लेस किया है, एयरक्राफ्ट इंजन नहीं है, उनका फ्लीट, हेलीकॉप्टर फ्लीट इज ग्राउंडेड, मोस्ट ऑफ इट, उनका ड्रोन्स भी ग्राउंडेड है. I read one article where they said that they need so much of, I've forgotten the figure, so many dollars for their fleet. तो जो ये लोन गए हैं IMF के लिए, वो पाकिस्तान आर्मी में जाएगा. अगर लोन आएगा, कहाँ जाएगा वो लोन? Right. IMF ऐसे लोन नहीं दे रहा है. Right, sir. So what I would like to put across to you, and for everyone's knowledge, what you're bringing out is Pakistan Army के पास पैसा नहीं है for maintenance, for engines, for missiles, spares, and drones. But at the same time, what I'd like to highlight is that it doesn't mean that Pakistan Army cannot fight.
they will be No, able to that is fight a war important. No, with. no, no, no. You cannot underestimate, never underestimate the The Pakistan army. I Pakistan am army. telling you, they are a very professional army. और अगर कॉमन एनिमी जो पहले से इंडिया था अभी सीजफायर चल रहा है, अगर कुछ हो जाए, दे विल यूनाइट इमीडिएटली ओवरनाइट. Yeah. The second thing which I'd like to bring out with or over as a clarification over what General Gautam Moorthy is saying, याद रखिए जब लड़ाई छिड़ेगा ये नहीं होगा कि पूरा इंडिया पाकिस्तान को पूरा बड़ा लड़ाई होगा. छोटे छोटे लड़ाई के लिए वो तैयार हैं, राइट. जैसे हमारा और चीन के बीच में लड़ाई सेक्टोरली ओनली इन लद्दाख हुआ, तो वी आर इक्वल देयर. उसमें उसी तरीके से वी विल हैव द सेम प्रॉब्लम. बट एट अ मैक्रो लेवल पाकिस्तान आर्मी, most of their equipment are in a bad shape, they don't have यस. ammunition and they're quite grounded. अब हमें सबको याद होना रखना पड़ेगा वो जो उनके पाकिस्तान आर्मी के स्टॉक्स में जो एमिनेशन है वो यूक्रेन को भी बेच रहे हैं, राइट, अंडर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. सो ये मोटे मोटे ये हैं. So shall we proceed ahead and we could Yeah, go ahead? and Yeah. since you have said that, and Russia is not liking it, I'm just Yeah, adding that Russia point. is also not liking it. I Okay, agree with you next, completely. Yeah. next. It's a very Two, important point you brought out. दे एक्चुअली आप देखिए पाकिस्तान कहाँ फंसा है. पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान जो भी एमिनेशन वगैरह पाकिस्तान जो भी एमिनेशन वगैरह दे रहा है वो यूएस प्रेशर के अंदर उनको यूक्रेन को दे रहा है. रशिया उसको पसंद नहीं करता और चाइना जो इसका बड़ा दोस्त है वो रशिया को सपोर्ट करता है. तो ये जो ट्रायंगल में भी थोड़ा कलफ है, राइट. सो इफ यू सी दे आर इन अ टाइट पोजीशन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टुडे. We are talking about the Pakistan army, so we will get back to the Pakistan in army. fact, I'll be interested in that your CPEC discussion on where Yeah, we'll China see is that. today. Yeah, That will be very yeah. interesting. Okay, next मैं is, एक मिनट सर, मैं please, सबको please. बताना ये भी चाहता हूँ कि ये जो किस्से हम कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, एक और दूसरे किस्से के में काफी कनेक्शंस होंगे जो मैं आगे जाके कनेक्शंस देता रहूंगा सबके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट प्लीज गो हेड सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज गो हेड. Okay, now, when General Munir was appointed, there were two lieutenant generals who resigned immediately, करेक्ट. and one of them was Faiz Hamid. यस. Or Faiz Hamid immediately resigned, and जो सीज फायर चल रहा था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का साथ, इमीडिएटली वो सीज फायर टूट गया. इसका क्या मतलब है? ये क्या कोइंसिडेंस है? क्या कारण था कि टीटीपी, मतलब कुछ नॉर्मली उनके साथ वो सीज फायर तो चल रहा था, तो ये कैसे टूट गया? क्या है इसके बीच में? और जो प्रेजेंट डीजीआईएस है जिसका पोस्टिंग प्रपोजल के ऊपर इमरान खान साहब बैठे रहे एसपीएम, वो अभी बता रहे हैं कि, और उन्होंने ले आया वो, ही इज somehow, there are rumors again Twitter, I am not saying anything, saying that he is leaking personal information regarding this Asim Munir, कि या आज ये आप. इलीगल सीओएस बने, वो पहले ही रिटायर हो गए थे, और जो शमशद मिर्जा है जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो प्रमोट हुए हैं, उनको निकालना है आसिम मुनीर को, एंड ही मस्ट बिकम चीफ बिकॉज ही इज द मोस्ट स्टेबल पर्सन. या और एक प्रोजेक्ट स्टेबिलिटी कुछ पता नहीं शुरू किया है. तो इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? इवन दे राइट. पाकिस्तानी डू नॉट नो in which direction, even their army does not know in which direction it is सो heading. दैट मीन्स, सो पहली बार हम देख रहे हैं कि इनके अंदर का रिफ्ट जो है ना, दे आर क्वाइट डीप. बहुत डीप हो गया, बहुत बहुत डीप हो दे वेरी गया. डीप रिफ्ट्स एंड दे आर नो देयर इज एंड दे आर politically divided for the first time in their history. The Pakistan army so far, whatever you have said, has always been politically united within, and they have imposed their political direction on the civilian executive and the judiciary and the legislature. See, they have been, although they have been, what you say, politically united, but who's within the Pakistani army Yeah, has so we'll talk of that, sir. उसके बारे में हम taken बात place करेंगे only. अभी. And Yeah, because आप of बताइए. unhappiness with their chief. Yes. That is what I want to bring out. That 1951 में आप देखिए, there was this Rawalpindi conspiracy. Okay.
Now, Rawalpindi conspiracy क्या था? That there was Major General Akbar Khan. मैंने पहले ही बता दिया था. With a few people he tried. फिर उसको against उसको निकाला गया. Inquiry was held and subsequently was reinstated. वो दूसरी बात है. December 71 there was one Brigadier F.B. Ali who tried to move a coup against President Yahya Khan. फिर कुछ हुआ नहीं. फिर जंग लग गया है. और जब भुट्टो आ गए थे, this Brigadier Ali said, and a few officers who felt very patriotic, they said ये भुट्टो गलत किया है. He should have let Mujib become Prime Minister of Pakistan. Pakistan would have never broken up. और ठीक बोल रहे थे कि अगर मुजीब बना था तो पाकिस्तान would not have broken up. And but भुट्टो ने आर्मी को कन्विंस करके so they tried this. 1980. When Zia became all so powerful, the same person who said, "What is this constitution piece of paper?" जो General Shankar ने बताया, कि Major General Malik tried to assassinate him. Against Musharraf, there were 4 assassination attempts, and one of the Pakistani press they said, "Cat with 9 lives." जो English में जो phrase है that cat has 9 lives. बिल्ली का 9 lives. फिर 2012 में there was one Brigadier Ali Khan who was arrested along with 4 officers. जब जनरल कयानी थे चीफ या राहिल शरीफ थे. और 2021 में there was a demand to expel the French ambassador within the Pakistani army. सिविलियन के बारे में वो जो जलसा लगा, जो riots हुए, वो सब दूसरी बात है. Within the army there was a strong demand that this French ambassador should go. That means क्या है? Influence of hard-line Islamic fundamentalism has taken very deep roots within the Pakistan army. Right. That is the conclusion you can draw. Now, what is there? This repercussions of a rift is extremely damaging. मैंने पहले ही बताया था कि आपको कि ये ऐसे डैमेजिंग कभी हमने समझा नहीं और कभी पहले हमने देखा नहीं. जो आज का इनका जो सूरत हाल है ना, पैसा है, Islamic extremism is complete. Today, I may not be exaggerating if I say Afghanistan is more stable. I'm sorry to be saying that, but if you can see the Afghan government, they may be very brutal. That's a different matter. But they are stable. But they are appearing to be more stable than Pakistan. Yes. So, किसने किसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ अभी प्रोवाइड किया है? उनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ थियरी कहाँ चला गया? और देखिए अभी अगर ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग ये अपनाते नहीं और इलेक्शन नहीं होगा 14th May को, and I don't see that happening because the Chief Justice is also being overruled by the government and the army, then Islamic elements allied to Imran Khan will assume tremendous significance within the Pakistani army. और अगर कुछ हुआ, there will be a severe backlash. If Asim Munir and those officers try to remove the pro Imran Khan elements within the senior leadership of the Pakistani army, then you will find the junior leadership up in arms. How this is going to come about, we do not know. You're looking at very, very, very interesting times ahead. Right. तो आपका संक्षिप्त में अगर मैं बताना, आपका पूरा आज का जो वार्तालाप हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, ये मैं बता सकता हूँ कि पहले पाकिस्तान आर्मी, there's a deep rift in the Pakistan army. They are divided from, the top ranks are divided. There's a divide between the top ranks and the bottom, right, as per their history. The veterans and the serving people, there's a clear divide. And they're divided on political lines. Some of them are supporting Imran Khan and some are supporting the current government. There's a probability that the current chief, if Imran comes into power, he'll be at loggerheads with the current chief. There are also rumors which I have seen where they say the current chief is not popular and hence this business of project stability. Right. And Pakistan army has a history of coups, as General Moorthy has explained. It is not so well equipped still. There are regular attacks
against TTP. I mean, by TTP against the armed forces, and Pakistan army is not able to do anything about it. They're also not able to influence the politics for whatever reason, whether it is because they want to politically stay away or not. So उनका हालत बड़ा कष्टा है. और आपने जैसे बताया है कि अगर कुछ पाकिस्तान आर्मी में रिफ्ट आ गया, कुछ हो गया, कुछ म्यूटिनी हो गया, म्यूटिनी होने का भी असर है और आसार है, मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब इट इज एब्सोल्युटली इन अ फ्रजाइल स्टेट. कांच की तरह कभी भी टूट सकता है पाकिस्तान आर्मी. मैंने अपने जिंदगी में पाकिस्तान आर्मी को इतना वीक पोजीशन में आज तक नहीं देखा, जहां लोग चौकीदार को चोर बोल रहे हैं. राइट, अगर आम आदमी चौकीदार को ही चोर बोल रहा है तो हालत बहुत बुरा है. पर मैं एक सवाल आपसे बात करना चाहता हूं, और क्योंकि इनका हालत बहुत बुरा है, सब कुछ कब कुछ भी हो सकता है, ये सब ठीक है, पर कैन द पाकिस्तान आर्मी रिवाइव विद एनी एंटी इंडिया एक्शन? क्योंकि अगर इंडिया के अगेंस्ट कुछ करेंगे तो पूरा नेशन उनके पीछे आ जाएगा, और अगर हम उसके ऊपर कुछ करेंगे एक्शन, फिर भी पूरा नेशन उनके पीछे आ जाएगा. उस हालत में पाकिस्तान का हालत क्या होगा? क्योंकि मैं एक सवाल, थोड़ा ये एक अहम सवाल है, इसके बारे में थोड़ा देर में बात करूंगा आपके विचार सुनने के बाद. मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ. पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, सेइंग दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज कैन नॉट स्टे टुगेदर एंड वी मुस्लिम्स वर द रूलर्स. फिर ब्रिटिश आ गए और फिर वी नीड आवर राइटफुल प्लेस इन इंडिया विच वी विल नॉट गेट अंडर हिंदू डिस्पेंसेशन, और निकल गए. और बेसिस ऑफ पाकिस्तान वाज इस्लाम. नाउ व्हाट हैपेंड was, so there was an anti-Hindu thing right from the beginning. फिर जाके देखा जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बन गया, फिर दे रियलाइज दैट पाकिस्तान Islam alone cannot hold it together. It has to be not just anti-Hindu but completely एंटी इंडिया. anti-India. या 230 million Muslims are in India. You cannot forget them. It became anti-India. So the only thing that can unite Pakistan today, and you have very rightly brought it out, is something where they can get together to express their anti-India sentiment. या सो That द is a dangerous spot that we need to be wary of. राइट, सो दैट मीन्स इट एक्चुअली, अगर हमारा नीति कुछ हो तो हमारा नीति ये होना चाहिए कि वी शुड लीव पाकिस्तान एंड इट्स आर्मी अलोन टू डू वॉट एवर इट वांट्स इंटरनली, एंड वी शुड नॉट join in any fight with Pakistan along the LC. As they Am I say, right? absolutely. Right. Never interfere when your enemy is making a mistake. Stay Mistake. far When away. वो जब खुद अपना खुदकुशी कर रहा है तो हम आपको उनको रस्सा दे सकते हैं, पर उनको मदद नहीं करना चाहिए, राइट, कुछ करके. सो फर्स्ट थिंग इज वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी वायलेंट अगेंस्ट across the LC. Not at all, not at all. We Not should at all. So let them be, let them sort let out them their be. own differences. So having said this, all of us should realize, because this is a tone setter, Pakistan army is the apex of the country. If the apex of the country is in drift, the country can disintegrate. If there's a mutiny tomorrow, and if that mutiny gains proportions, you're looking at a disintegrated country, and the disintegration of a country which will happen will lead to mass anarchy and unrest. This is a live possibility which is in the air, and this is not something, is a deduction of what we have spoken today. ये बात जो है ये कि अगर कल के दिन पाकिस्तान आर्मी में कुछ हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर कलबली मच सकता है, ये उनके विशेषज्ञों की बोलबाला है और उनका लिखित में एनालिसिस है, राइट. एंड पाकिस्तान इस टाइम में एक ऐसे मुकाम में खड़ा है जहां इधर भी काई है और इधर भी काई है. Am I right, sir? You're absolutely right. I heard a fascinating discussion on this very aspect of two very senior, absolutely patriotic Pakistanis,
senior meaning about our age, who are saying that this is our biggest fear is the breakup of Pakistan if they're not able to resolve it. He didn't say military, but you've correctly brought it out. He Yeah, said my if view they're is, not able to resolve this political impasse that they've landed up into, the Pakistan can break up. yeah. So I think we have discussed enough about Pakistan, sir, Yes. and Pakistan army. We've given a clear idea as to where Pakistan is, Pakistan army is, and the interrelationship and किस मुकाम में खड़े हैं. कुछ सवाल लेते हैं और मैं अहम